shame is not bad per se, but it's just that when you just उस चीज को अगर एक्सेप्ट कर लेते हो। सर देखो सर, मतलब मिस्टेक करना गलत बात नहीं है, बट मिस्टेक को रिपीट करना वो बात गलत होती है। इट इज ओके टू कमिट मिस्टेक्स, वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट machines, we will commit mistakes, so it is okay obviously, and to accept that particular shame is quite imperative on our part, I would say. That is from my side. What form can this acceptance of a mistake take? I mean, acceptance just saying कि मैंने accept कर लिया, ये काफी है? नहीं सर, इसको इम्प्रूव करना तो सर करना है ना। जैसे मैं बाथरूम में गया, टॉयलेट में गया, चुपचाप मैंने बोला मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने चोरी करी, और फिर मैं बाहर आ गया और सारे काम धाम में लग गया। इज दैट फाइन? No, इज दैट sir, गुड it's इनफ? not fine, not fine. So therefore what I'm saying, that writing about these mistakes, or calling them mistakes also is not a very good idea. We can call them something else. We can simply call them embarrassing events. Absolutely, sir. Okay. है ना? So writing about embarrassing events, how does it help? What was discussed in your group? What did your group come up with? So we discussed our personal experiences of, like, in what were the circumstances which we felt shame of, and how do we how did we मतलब कि ना navigate across that thing, across that particular thing. So this was what was discussed particularly in our group, I would say. Right. When you joined you're doing your MCA, no? No, you're doing something accounting training. I What are you doing? LLB. You're doing B. LLB. Okay. So when you joined LLB course, was there something like ragging? No, sir, no. Especially in law faculty, you. Okay. Okay. Thank you so much. Over to Kushagra. Kushagra, what did your group discuss? Any new, yes, sir. Any new insights or wisdom? Sir, so in my in the breakout room, we had a conversation about like how we can process the emotion of shame and guilt by introspection. So we had a discussion about on how stranger talk and anonymously posting confessions or self-recording a video of ourselves accepting our mistake. It helps to like uh, ease our emotions, which are associated with the shame and guilt, irrespective of it's being associated with stammering or something else in life. And we also shared some embarrassing events like we had uh, due to stammer in our school or in our childhood. So yeah, it was overall a great experience where we we had a conversation about how we can more effectively process shame and guilt in life. Yeah. So what are these more effective ways of processing shame? Sir, I think journaling helps a lot. If you can write of, of whatever comes to our mind in our own words, it helps to like gain some sort of clarity on what we are feeling at that moment. So it helps. And other than journaling, we can also uh, try to have short conversations in a uh, um, so for example, in the TISA group, if we can try to have short conversations as stranger talks, so it helps as well. And yeah, so we had a discussion around that. Yeah, I agree with you, and I support especially this the medium of writing. Why? Because I've seen it. I mean, I've seen it myself that the morning when I get up and try to think of 3 gratitudes,
I just muddle through that. In the thinking process, it may or may not happen. But when I pick up a pen and write three gratitudes, then my brain is actively engaged with the process of writing and thinking and feeling. So writing, people say, is a very powerful tool of becoming mindful of an activity of thinking. Because sometimes some people say that I should introspect, but introspecting is limited to the head only. And what goes on in the head, sometimes we don't even know. One thought comes and then other thoughts come and jump in, and it all leads to muddled thinking. But when you take a pen and paper, and when you start writing a linear sentence, when you write one gratitude, second gratitude, so in the same way, when you write your childhood events in your private journal, uh, something uh, more significant is happening than mere thinking about it, than mere recalling it. So I will strongly support this idea of writing down. So writing is a great tool. Thank you so much, Kushagra. Let me invite Thank you, Yogeshwari. sir. Yogeshwari, what did you all discuss? How does recalling a embarrassing event from childhood can help? योगेश्वरी, बचपन की ऐसी बातें सोचने से या लिखने से क्या फायदा होगा, कैसे फायदा होगा? योगेश्वरी. Okay, if you are not able to respond, I'll just ask Dr. Vijay. Dr. Vijay, give us a couple of ideas on this. How does it work? Dr. Am Vijay I, sir, Aware. audible? Yes, you are Am I audible. audible? Yes. Yes, you are audible. सर मैं थोड़ा सा बाहर होम टाइम में हूँ, अच्छा, अगर कोई बात नहीं, कनेक्शन का ठीक है, मैं, प्रॉब्लम हो जाए तो हाँ, नहीं कोई थोड़ा सा बात, माफ करना सर, मुझे मैं अच्छा, शेयर नहीं करना कोई बात, चाहता हूँ। हाँ, तो बोलिए बोलिए. अच्छा, मैं इस बीच में बुला लेता हूँ अरहम रफीक को. अरहम, अरहम, आप सुन पा रहे हैं? कंटिन्यू सर। अच्छा, हाँ, यस सर, मैं डॉक्टर विजय, कंटिन्यू। हाँ हू वांट्स टू कंटिन्यू? मैं थोड़ा अच्छा, डॉक्टर विजय, शॉर्ट हाँ, में ठीक बताना है, चाहता हूँ सर। ठीक है, सो आई वुड बताइए. लाइक टू सो आई वुड लाइक टू से इन दैट हाँ, suppose there is like shameful or embarrassing uh, incidents happen in the life, so that makes our memory and switch stored in the brain for the lifelong. okay. Your line is poor, डॉक्टर विजय. डोंट वरी, आई कम बैक टू यू आफ्टर सम टाइम. अरहम, आप बताइए, आपने अब तक क्या समझा? सर सबसे पहले तो हमें ये समझाना चाहिए अपने आप को, जैसे हम अगर स्टैमरिंग की वजह से कोई ऐसा एम्बैरसिंग मोमेंट रहा, तो सबसे पहले ये समझाना चाहिए अपने आप को कि मैंने कोई हकला के कोई गुनाह नहीं किया था, कोई ऐसी कोई शर्म वाली बात नहीं थी, तो ऐसे अपने आप को समझा सकते हैं। ओके, ठीक है. तो ये करने का तरीका क्या, हम लोग बातचीत जहाँ पे जो कर रहे हैं वो क्या तरीका है? ये शर्म से आजाद होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये अपने आप से कहना कि मैंने हकला के कोई गुनाह नहीं किया, ये तो ठीक है, मगर इसमें अगर और गहराई में जाना तो हम क्या करेंगे? हेलो। हाँ, बोलिए. मैं आराम से बात कर रहा हूँ अभी. एक मिनट, ठीक है, सुनता हूँ। डॉक्टर विजय, आप रुक जाना एक मिनट. हाँ, हाँ, बोलिए आरहम. अब तक आपने क्या समझा, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में? सर जर्नलिंग के थ्रू उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हाँ, एकदम ठीक है किसी आपने, एकदम ये अपने बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ दिमाग में ये सोचना कि हकलाना कोई गुनाह नहीं है, ये काफी नहीं है. क्योंकि दिमाग में काउंटर थॉट भी बहुत सारे हैं. दिमाग में जब आप सोचने चाहते हैं तो दिमाग का एक हिस्सा कहता है गुनाह तो नहीं है, फिर दूसरा कहता है मगर है भी वैसे तो देखा जाए तो. तो दिमाग में ही चलता रहता है. तो इसलिए जरूरी है कि आप उसको जर्नलिंग करें, यानी लिखें. जब कोई चीज़ आप लिखते हैं तो साइकोलॉजिकली वो ज़्यादा गहराई में आपके दिमाग में घुसती है. तो अगर आप ऐसी बात अपनी डायरी में लिखते हैं, किसी को पढ़ने को ना दें, शेयर ना करें, लेकिन लिखें,
कि जब मैं 5वीं क्लास में था तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। ये लिखना भी काफी है, इससे आपके दिमाग में अंदर से हीलिंग होती है। तो ये मोटा मोटा जो है लबो लबाब है यहाँ पे। ओके, सो बैक टू धीरज पूनिया। धीरज, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस राइटिंग सर डाउन शेम स्टोरीज? पहले तो मैं टोटली एग्री करता हूँ कि जर्नलिंग से हमारी जो ये चीज काफी इम्प्रूव हो सकती है। शर्म से हम आजाद हो सकते हैं। दूसरी चीज, शर्म से आजाद होने के लिए बेशर्म होना भी पड़ता है। और उसका मतलब ये नहीं होगा कि वी आर एक्सेप्टिंग द स्टैमरिंग, बट वी शुड नॉट accept our poor communication। तो यस, यस, बेशर्म होने से भी हम शर्म से आजाद हो सकते हैं बस। राइट, ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो आपने कभी ऐसा कुछ लिखा है अपनी प्राइवेट डायरी में, या कभी शेयर किया है हाँ किसी सर। के साथ? किया है? सर मैं अच्छा, ठीक। खुद खुद लिखता हूँ, बट मैं हमेशा एक डर रहता है कि वो डायरी कोई और पढ़ ना ले, तो मैं उसे कहाँ छुपाऊं, कहाँ रखूं, तो ये भी चलता है हाँ, हाँ। दिमाग में। तो आप उसको लैपटॉप पे भी पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम लोगों ने एक वेबसाइट पे पेज दिखाया था मैंने, पता नहीं आप तो उस समय थे कि नहीं थे, लेकिन मैंने एक वेबसाइट दिखाई थी जहाँ पे लोग एनोनिमस में, यानी अपना नाम नहीं बताते हैं, मगर वो अपनी ऐसी घटनाएं शेयर करते हैं और शर्म और डर से आज़ाद हो जाते हैं। तो आप वहाँ पे भी अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जहाँ पे कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता, और जहाँ पे आप ऐसी बातें शेयर कर सकते हैं। और ऐसी बातें शेयर करने से फ़ायदा ये होता है कि एक आदमी ने शेयर किया तो उसको कम से कम 10, 12, 15 हज़ार लोग पढ़ते हैं, और उनके ऊपर भी उसका एक बहुत अच्छा असर पड़ता है। वो भी अपनी शर्म से आज़ाद हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि ऐसा औरों के साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये फंडा है इसके पीछे। तो गोकुल राम से मैं पूछना चाहूंगा कि गोकुल राम, अभी तक आप कुछ फॉलो कर पाए, समझ पाए? आप थोड़ा लेट आए थे, बट आर यू एबल टू ग्रास्प द ड्रिफ्ट? हाँ सर, गोकुल मैं राम। लेट आया था तो वो अच्छे से नहीं समझ पाया था सर। लेकिन ये था कि मतलब डायरी लिखना बहुत बहुत जरूरी है। उसमें क्या है कि अपन अपने आप को थोड़ा बहुत समझ पाते हैं सर, और अपने बारे में थॉट वगैरह और माइंड में क्या चल रहा है उसको भी एक्सप्रेस कर पाते हैं। ऐसा कुछ मतलब मेरे को हाँ, थोड़ा बहुत हुआ, सर फील बिल्कुल हुआ। बिल्कुल, हाँ, यानी आपने ठीक समझा। और मैं फिर से बता दूं कि हम सब जानते हैं डॉक्टर शीहांस आइसबर्ग। आइसबर्ग वाला जो मेटाफर उन्होंने यूज़ किया है वो यही है कि हकलाने में जो दिखता है और सुनाई पड़ता है वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन जो नहीं दिखता है और जो कभी हम जान नहीं पाते उस इंसान के, वो इंसान के दिल में छिपा हुआ है। और वो है डर है, शर्म है, और गिल्ट है। गिल्ट मतलब अपराध बोध, कि हकला कर मैंने अपने खानदान की नाक कटा दी है, हकला कर मैंने अपनी क्लास को शर्मिंदा कर दिया। तो ये जो फीलिंग ऑफ गिल्ट है, ये आइसबर्ग का बड़ा हिस्सा है। और इसको निकाले बगैर जो है वो ऊपर के छोटे से 10% स्टैमरिंग को आप डील नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसके ऊपर काम करना जरूरी है। और इसके ऊपर काम करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है जर्नलिंग। और अगर प्राइवेसी का एक मुद्दा है तो आप अपने लैपटॉप पे भी उसको प्राइवेटली पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपना कोई गूगल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जो कि प्राइवेट रहेगा, उसमें लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक वीडियो, जहाँ पे विद्या ने शेयर किया है अपने सेकेंडरी बिहेवियर्स के बारे में बड़े विस्तार से। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप कि इतनी ही बारीकी और इतनी गहराई की उम्मीद मैं आपसे भी करता हूँ। आप सब लोग जब सेकेंडरी वाला वीडियो बनाएंगे तो आप अपने स्टैमरिंग को इतनी गहराई में स्टडी करके उसको फिर समझाइए वीडियो पे। सो लेट मी शेयर दिस वीडियो। शेयर साउंड ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो शेयरिंग, यस। सबको सुनाई पड़ रहा है और दिखाई पड़ अरे रहा है? अयो अरे
everyone. Today I'm going to talk about some of the secondary behaviors I exhibit while having conversations. First is the eye movement. I tend to look down or up or even widen my eyes or sometimes force my eyes shut whenever I encounter severe stammer. Um, Second one is I visibly go out of breath whenever I have to deliver a chunk of information. Um, and also I sometimes club the word that I stammer with the previous word. That is an avoidance behavior because I do not want to stammer that word. So this will also make me forget to take breath in between words. And then sometimes and also I have a weird habit of mouthing a sentence after telling it aloud. I have been exhibiting this behavior for years and years. So it's like, for example, there is a bottle of water, so I tend to repeat it again and I don't know why I do that. And the next one is it is very impossible for me to have a neutral face. I mean have a I express too much in my face whenever I have conversation with people, so sometimes it is better to have a neutral facial expressions. So this I am learning now. Yeah. And then and also whenever a person asks me about whenever I have to explain about my artwork, I tend to go I'll get really anxious because for example, if there is one paragraph, I will first start something in the beginning and then I directly go to the end of the conversation because I do not want to talk a lot. This is also an avoidance behavior because I don't want to stammer. So I am working on this one now. I want to talk more about my work in a very Okay, guys. So I've stopped sharing. So what do you think? Was this a good analysis of secondary behaviors and some avoidance behaviors also? Kushagra, what do you think? Yes, sir. Kushagra. So, sir, I think Vidya ma'am has done a fantastic job of like introspecting her own avoidance as well as secondary behaviors. Yeah, I think it's perfect. Yeah, it needs a lot of courage. Yes, sir. Maybe Yes. this also is true that unless you've got a lot of courage, you will never be able to have such a honesty and objectivity about your own behavior and then talk about it on video. So this needs a lot of courage. And I believe every stammerer has got a lot of courage, but it is hidden somewhere under secondary behaviors, hidden somewhere there. But if you make such videos, all this will come out. So I will strongly recommend everyone to make a video like this, talk about your secondary behaviors. But before you do that, you have to first, make a long list. You just cannot make a video like this. I sometimes stammer and I blink. Not enough. This is a very superficial study. So in order to do justice to this video, you should look your old videos and analyze each and every behavior, every blink, every hand jerk, every time you shake your head or you change the word. Because these are the things only you can know. For example, if you change a word, how can I know that you change the word because of fear of stammering or because you genuinely wanted to use a better word? We all revise our speech. As we are talking to our audience, we sometimes change a word because we found a better word, a better technical word, the way I did just now. So, how do we know that this is stammering or is it just revising
because you found a better word. So therefore, only you can know what is your stuttering behavior, what are your secondary behaviors, what are your avoidances, and therefore you are the expert on your stammering. So do a proper study, look at your videos, your old videos, analyze, think about it, make, take down notes, and then make a video like this, in-depth analysis. So before we wind up, I'll just invite Manish to tell me how he's going to do this video about secondary and avoidance behaviors. Do you want to make them separately or do you want to make them in one video? बताइए मनीष जी. हाँ जी. अ, अ, मैं एक जो मेरा मुझे मुझे जब मैं बोलता हूँ, बोलने से पहले अपने सांसों को रोक लेता हूँ और लेकर बोलता हूँ. अभी मैंने अपना आज जगन्नाथ बुक पढ़ी थी, में लिखा हुआ था कि बच्चा अज्ञानवश सोचता है कि जोर लगाने से उसका शब्द निकल जाएगा, लेकिन जोर लगाने से हमारे स्वर तंतु और ज्यादा जकड़ जाते हैं और वोकल कॉर्ड्स काम नहीं करते हैं. और ये मैं शुरू वाले वर्ड्स में ज्यादातर होता है, जब बोलने से पहले मैं सोच लेता हूँ. तो और फिर जब फियर आ जाता है, डर आ जाता है, तो फिर बाद के वर्ड्स में भी काफी बार हो जाता है. ठीक है, तो ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें आप वीडियो में बताइएगा, हिंदी में बनाइए मगर विस्तार से बनाइएगा, इसी ऐसे ही जैसे अभी आप मुझे समझा रहे हैं. सो ये सारी बातें उसे बताइएगा उस वीडियो में. तो अब हम लोग वाइंड अप करने वाले, टाइम हो रहा है, लेकिन जाने के पहले आई जस्ट वांट टू गिव कपल ऑफ मिनट्स टू विद्या टू शेयर हर फीलिंग्स, हर थॉट्स about her video. Vidya, over to you. What do you think about this video? I mean, first of all, when I was doing this video, my husband was there in front of me, so it was kind of a conversation. I mean, like he saw me doing this. It's a nice feeling to have two things at the same time. Yes. And for me, it helped me to know. I mean, I didn't know. I mean, I exhibited so many secondary behaviors. So, I mean, analyzing this helped me to know all these things about my own self. Like, I can do these things. And also, while talking about it, it felt much more stronger. I like much more. It's like I can live without thinking about what others will think of these secondary behaviors as well. So yeah, all these things are there. Thank you. Thank you so much, Vidya. Thank you so much. Your video was really very good. I shared it with Dr. Amit Bajaj also because it was full of deep insights. Very rarely do we think about our own behavior at such depth. So you've done a great job. So continue making videos, and I'll request everyone to continue making videos and also continue practicing your techniques in the stranger calls and share the call records. Because believe me, unless you are not doing it on a daily basis, you will not be able to do it in real life situation. By the way, just to share with you, I'm learning Python. I don't need it. I'm not a coder, I'm not a programmer, but I just wanted to keep my brain alive. So I am learning Python, and I've discovered this very interesting thing. If there is just 1 day break, 2 day break, and then on the third day I start writing in console some code, I find it very difficult to think. But if I'm doing it on every day, if I'm doing it, just half an hour, write a couple of lines of codes, then I find that I'm able to do it. But if there's a break of 2 days, just 2 days, I find it very difficult to restart. So same thing happens with your stammering techniques also. If you're not practicing them every day, and remember, I'm not asking you to practice 24 hours a day. No. Dr. Amit Bajaj has cured me of that idea. You don't have to practice 8 hours, 2 hours. No. Just in the morning,
make 2 calls and practice technique on just 1 or 2 words. That's all. But do it consistently every day. Don't think that I'm too busy for doing bouncing. I'll do it on the weekend. So weekend warriors will not be able to crack it in the job interview. If you're not doing it every day, believe me, you won't be able to do a proper bouncing or a pull-out in a job interview. And job interview is the place where you need your techniques most, where people go in a block and are not able to come out. So therefore, be very consistent. A little practice every day. That should be your goal. And keep on making videos and finish module 2 quickly. Then we'll go to module 3. Thanks, everyone. A big hand to all of you. Okay, guys. Thanks a lot. Thank you, sir. I'm winding up.